ओके, मेरी आवाज आ रही है? Can you hear me? Yes, sir. हाँ, तो कैमरा ऑन करो ना फिर। कैमरा ऑन। कहाँ है सभी? आज कमी है? कितने हैं? 11, 12, 13। कैमरा ऑन। row number 12, 26, 15, 25. हाँ, so मुझे लगता है हमारा यूनिट 3 भी अब कंप्लीट हो रहा है। So let's do this। जो हमने किया था रेडॉन-निकोडियन थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, to show that Laplace transform is not surjective from integrable functions to continuous functions on positive real numbers with the help of open mapping theorem। अब इसी तरह से रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम की मदद से हम कर सकते हैं रेडॉन-निकोडियन थ्योरम। So let me state it। फिर उसको हम एक easy proof है actually with the help of what do you call it, with the help of this क्या बोलते हैं Rees representation theorem for Hilbert spaces। Okay, let me state it। let me share first the screen। CR है यहाँ पे? उमर तुम यहाँ हो प्रेजेंट? रोल नंबर क्या है उसका? No, sir. 33. वो कहाँ है? वो छुट्टी मारता है सिर्फ। तो कोई तुम इस अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट उसको भेज देना। हाँ, डिप्टी सीआर है यहाँ पे? आमिर, आमिर, आर यू हियर? Sir, no. वो भी नहीं है। तो कौन है यहाँ पे? तो कोई तुम में से वो अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके उमर को भेज देना, ठीक है? ठीक है ना? Okay, sir. Good। So let's start this। Okay। इसको क्या हो गया? रेजर कहाँ है अपना? एक मिनट, इसका कलर। ओके, तो हम करते हैं रेडॉन-निकोडियन थ्योरम। लेट मी स्टेट इट। इसके बहुत सारे प्रूफ हैं एक्चुअली, काफी ज्यादा प्रूफ हैं इसके, आई थिंक। लेकिन हम यूज करेंगे, शायद तुमने मेजर थ्योरी में इसको किया होगा, इसका कोई प्रूफ किया था? मेजर थ्योरी में किया था इसको। नाउ गिवन finite measure, given finite measures rather, mu and nu on a sigma algebra let us denote it by sigma, such that
such that nu is absolutely continuous with respect to mu continuous with respect to mu, इसका मतलब ये होता है एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू म्यू का मतलब है अगर म्यू किसी सेट का मेजर 0 है तो व्हेनेवर नहीं अगर म्यू का मेजर 0 है इट इंप्लाइज म्यू का मेजर 0 है उसी सेट का फॉर एनी मेजरेबल सेट जो भी ही है ओके if mu is with respect to absolutely continuous with respect to mu, then there exists a mu integrable function, then there exists a unique g belonging to L1 mu such that the measure can be defined as an integral with respect to the other measure, and a mu of E is equal to integral over E gt mu for any measurable set E. ठीक है तो यहाँ पे फाइनाइट मेजर होना इम्पोर्टेंट है अब प्रूफ इसका बिल्कुल जो बोलते हैं ना जो तरीका वहां है जैसे तूने मेजर थ्योरी में कहा बिल्कुल डिफरेंट नाउ since they are finite measures उसका मतलब ये हुआ जो पूरी की पूरी स्पेस है x अगर उसका हम नाम करें mu of x is less than infinity and similarly mu of x is also less than infinity because of finiteness of these measures we have L sub 2 in square integrable functions with respect to the measure mu plus nu. It is contained in L2 mu, which is contained in L1 mu. Actually, these are embeddings with continuous inclusions. We can think of them as, of course, पहले तो ये कि contained है और ये containment continuous है. ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ embeddings. मेरे कहने का मतलब है अभी इसका सबसेट है लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी फिर में डिफाइन कर सकता हूँ आइडेंटिटी फ्रॉम से L2 mu plus nu to अगर मैं ये डिफाइन करता हूँ L2 mu क्योंकि इसका सबसेट तो है then this identity is a continuous map with respect to जो भी यहाँ पे नॉर्म है जो कि इंटीग्रल नॉर्म है by the way इसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं है ये वो फंक्शंस हैं f is measurable and this thing exists यानी f is integrable with respect to this measure mu plus t of course modulus square d mu plus nu and how this is just defined as वैसे इसका मतलब कुछ नहीं सिवाय इसके d mu plus मतलब you just split that measures पता नहीं तुमने शायद measure theory में कहीं पे किया भी होगा okay now हाँ why don't I this is home assignment ये जो आइडेंटिटी है इस तरह से इट्स कंटिन्यूअस दोनों ही यहाँ से भी L2 is always contained in L1 वो तो हम कर ही चुके हैं लेकिन अगर मैं आइडेंटिटी फिर डिफाइन करूं फ्रॉम L2 inside L1 then that identity would be continuous ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है वैसे सीधा ही है you just have to use I think कोशिश वर्स इनइक्वालिटी में
हाँ, Cauchy-Schwarz inequality से हो जाएगा, plus the fact that the measures are finite, जो कि मैंने लिखा. Define phi of f to be equal to f d mu for all f belonging to L2 mu plus mu. देखो अभी इसका सबसेट है तो इसके अंदर भी है, तो it's an integrable function, so this is a well defined thing. Then phi is of course linear because integrals are linear, and of course scalar valued है because this would be just a number, and phi of f जो है वो होगा less than equal to of course integral f d mu जो भाई Cauchy-Schwarz inequality होगी. अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं, then I apply the Cauchy-Schwarz inequality, this would be less than equal to integral f square d mu into some constant, right? Actually होना चाहिए constant, ये होगा 1 square d mu. Of course यहाँ पे आना चाहिए 1/2, right? उसका कोई मतलब नहीं, यानी वो होगा, let me write it equal to, this would be measure of x जो यहाँ पे होगा, और हमें पता है वो फाइनाइट है, जो ना पूरी स्पेस है x, where x is the whole space. यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगा, into इंटीग्रल दिस. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रल f में एक नॉन नेगेटिव नंबर को साथ में ऐड भी करूंगा तो यहाँ लेस देन इक्वल टू लगाऊंगा, f स्क्वायर डी म्यू, या मैं ऐसे लिखता हूँ एक स्टेप एक्स्ट्रा साथ में क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, डी म्यू प्लस म्यू स्क्वायर होल रेज पावर 1/2, दैट्स इक्वल टू, मतलब इसका मतलब ये नॉर्म है इसका इन दिस स्पेस. In this space, this is norm of f. So since it's a finite number, fixed finite number, so phi of f in mod is less than equal to k times norm of f. तो उसका मतलब ये हुआ phi is a bounded linear function on L2 mu plus nu. इसके बाद we use Rees representation theorem. Now since L2 mu plus nu is a Hilbert space, by Rees representation theorem, जो कि तुमने किया होगा इन क्या बोलते हैं function analysis 1, of course, there exists a unique function, there exists a unique h belonging to L2 mu plus mu such that phi of f is equal to the inner product f with h for all f belonging to L2 mu plus mu. But as we know, the inner product is defined as what? As right, it is defined as f rich. How I am talking about real value, सारी की सारी functions, तभी ये apply होगा real valued functions. Anyways, so it would be f into h d mu plus nu, but this is defined as, so therefore I would have phi of f जो मैंने define किया था originally, phi of f is also equal to f d mu.
for some measure. So this would be therefore integral f d mu is equal to integral fh d mu plus mu for some h belonging to L2 mu plus mu. Actually unique है ये h. Okay, तो पहला स्टेप हमें मिल गया. अब यूजिंग इसको हम थोड़ा सा अगर simplify करें using the fact to break the measure here, then I can write it as integral f into 1 minus h, क्योंकि minus fh आएगा. I would have d mu आ जाएगा इस साइड पे is equal to fh d mu for all f belonging to L2 mu plus mu. Let's name this equation star. ठीक है. Now we claim, चलो मैं we claim, चलो एक दो claims हैं तो claim 1. 0 is less, h is strictly positive and less than equal to 1, mu almost everywhere. यानी जहां पे ये h 1 से बड़ा है या 0 से less than equal to है, उस सेट के mu measure 0 है on x, जो ना हमारी फंक्शन है. Now उसके लिए let f be the set of points in x on which h is less than equal to 0. यानी मैंने माना वो सेट है, मुझे दिखाना है f का मेजर 0 हो, राइट. सो f का म्यू मेजर 0 हो. सो I have to show that the mu measure, यानी mu of f is equal to 0. Let us take एक फंक्शन लेते हैं हम f which belongs to, of course it would be just a characteristic function of the, मतलब उस टाइप की. L2 ये हमारा यूजुअल है डिफाइन करना, that f of x is equal to 1 on f and it's equal to 0 on f complement. ठीक है. Now this is of course a step, it's a characteristic function, therefore it is integrable, iterable, whatever, right. तो ये इसमें belong करती है क्योंकि just a step function. तो मैंने f यहाँ पे एक ली, लेकिन ये जो हमारा इक्वेशन है ना स्टार, it is true for all f, in particular all small f, I mean in particular for this small f. So इसमें अगर हम substitute करें, so therefore from star, यहाँ पे therefore from star मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, स्टार कहता है कहाँ है स्टार, हाँ स्टार से मुझे मिलेगा इंटीग्रल f ऑफ, ऐसे हम लिखते हैं पहले 1 minus h d mu is equal to integral fh d mu implies, देखो यहाँ पर तो सिंपली आएगा f जो है वो या तो 1 और 0 है ना, और 1 कहाँ पे है, 1 है ये f पे, just a minute, 1 on f, 0 on f complement is the characteristic function of f, this set f. So यहाँ पे आएगा, this should be actually 1 minus h d mu would be, यहाँ पे आना चाहिए खाली सेट f क्योंकि बाकी जगह 0 है f कॉम्प्लीमेंट पे, और यहाँ पे हमें मिलना चाहिए on the same set f h d mu. ये सही होगा, right? Now
म्यू मेजर ऑफ f जो है, just a minute, म्यू मेजर ऑफ f है that should be less than or equal to इंटीग्रल ओवर f, चलो मैं लिखता हूँ उसको पहले, 1 minus h times d mu, which is equal to integral over f h d mu. और since f पे जो है, let's do it. अब पहले तो ये क्यों होगा, न्यू मेजर ऑफ f should be less than or equal to this. चलो let me इसको करते हैं थोड़ा सा, because this thing, अगर मैं फंक्शन देखूं, मैं मान चुका हूं, राइट, मुझे ये दिखाना है, मैं मान रहा हूं f पे जो है ये फंक्शन नेगेटिव है। अगर f पे ये फंक्शन नेगेटिव है इस सेट पे, so what does that mean? That means, हाँ बिल्कुल, that means this thing, f h पे, so it means h पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब h पे अगर नेगेटिव है f पे, तो इसको क्या होगा, पहले तो ये कि दिस शुड बी नेगेटिव, नो ओनली मुझे ये चाहिए यहाँ पे कि म्यू मेजर ऑफ f इज लेस देन और इक्वल टू दिस थिंग, व्हाई वुड दैट बी द केस, मैं मान चुका हूँ h इज नॉन नेगेटिव, हाँ f पे इस सेट का जो क्या बोलते हैं, h नहीं, h जो है, h is nothing, h तो कोई भी फंक्शन, h is a unique function which is integrable, तो यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, so mu of f should be less than equal to, mu of f इससे less than equal to होगा, that is what we have to show. पहले मैं देखता हूँ, mu of f जो है उसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल f d mu, लिख सकता हूँ ना, ओके, बट हमने h को लिया था बिगर देन 1, ओके, it is equal to this, is this less than equal to integral 1 minus h d mu, ये कब होगा, when 1 minus h is bigger than equal to 1, yes, ठीक है, because this 1 minus h is bigger than equal to 1 because h is negative, and since h is negative, 1 minus h is bigger than equal to 1, so therefore integral of this would be with respect to mu, ठीक है ना, which is equal to of course over the set h जहाँ पे ये नेगेटिव है, f क्योंकि यहाँ पे सेट ही था, कोई भी सेट हो सकता है, because this is true, so which is equal to mu measure of f, so this is the reason, because h is negative, that's fine, and this is equal to h by our least representation theorem, and this is negative again because h is negative, so that's fine, okay, so it implies that mu measure of f is less than equal to 0, लेकिन हमें पता है मेजर जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इट हैज टू बी 0, राइट, तो हमने दिखा दिया कि इस सेट का मेजर 0 है जहां पे f नेगेटिव है, अब हमें दिखाना है अगर 1 से बड़ा जहां पर है वहां पर भी ये 0 होगा, देन आवर फर्स्ट क्लेम दैट इट इज, ये जो अपना है h lies between 0 and 1, EE with respect to measure mu on x, ये प्रूफ हो जाएगा, ओके, उसको भी हम करेंगे, now let G be the set of points in x on which h is bigger than 1, अब हम ये भी दिखाएंगे कि G पर भी ये 0 होगा, then again choosing function, then choose f a function 1, choose a function f belonging to L2 mu plus nu
such that f of x is the characteristic function of g. अच्छा सीधे लिखना चाहिए था, doesn't matter. This is equal to 0 for x belonging to g complement. मुझे दिखाना है मेजर ऑफ जो है ये 0 है. अगेन अगर मैं इस फंक्शन का वैल्यू दूं उधर अपने स्टार में, मतलब f का यहाँ लगा दूं फंक्शन, so you would get this thing. Star gives, since star is true for all f belonging to L2 mu plus nu, so therefore I should have star gives integral g 1 minus h d mu is equal to integral g h d nu. Now assume measure of g is positive. Suppose ये 0 नहीं है, then LHS जो है is negative, क्योंकि मैं मान रहा हूँ h of x जो g पे है is bigger than 1, है ना? h of x is, नहीं sorry, then LHS is negative because मैंने क्या लिखा 1 minus h, हाँ LHS is negative because मैं मान रहा हूँ, कहाँ गया, मैं मान रहा हूँ h जो है वो bigger than 1 है, और h अगर bigger than 1 है और कहाँ गया, h अगर bigger than 1 है, so that means 1 minus h जो है वो less than 1 है, so it means over g hx minus 1 नहीं 1 minus h of x जो है this is 1 minus, this is negative on g, so therefore अगर ये less than 1 है, that means integral 1 minus hx dx है वो less than 1 है, that's fine, over the set g, right? और हाँ बिल्कुल HSS is negative. Now then LHS is negative because of this, but RHS is positive, but right hand side is positive. क्यों? क्योंकि H जो है वो हम मान रहे हैं it is bigger than 1. H is bigger than 1, therefore integral g h du जो है is bigger than 1. That means this is like this. So of course this is just a measure of, right, this is double the nu of g, और चूंकि mu है absolutely continuous with respect to mu, तो mu of g भी positive होगा, मतलब ये positive होगा, this would be positive, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो अगर nu 0 हो जाएगा तो फिर mu को भी 0 होना पड़ेगा. तो कहने का मतलब in short it's a contradiction because LHS is negative and RHS is positive, so a contradiction again. तो अभी हम पहुंच गए, ये तो हमारा मेन. सो therefore mu of g अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये 0 होना चाहिए, तो हमारा हो गया. So we can choose, तो यहाँ लिख लो our claim is justified, which proves our claim. Our claim कहने का मतलब which proves our claim that it lies between 1 and 0. मतलब ना इसकी values almost everywhere. Thus we can assume that H is defined on X such that 0 is less than H less than equal to 1 on X. तो चूंकि अगर हम सेट ऑफ मेजर 0 पे फंक्शन को अब 0 कर दें
तो हमारे इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा जो ओरिजिनल असर्शन है ना रीप्रेजेंटेशन थ्योरम की, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं फंक्शन को जीरो कर दूं ऑन अ सेट ऑफ मेजर जीरो। तो बजाय में ए लेने के मैं अब मान सकता हूं कि नहीं ये सच में यही है, मतलब ये जीरो है, इसके बाहर मतलब फंक्शन के वैल्यूज सारे के सारे यही यही रहते हैं। They are either positive and less than equal to 1 or less than equal to 1. They cannot be bigger than 1. Because we can adjust the values of the function or a set of measure 0 without affecting star. जो हमें स्टार मिला था ना, स्टार ये वाली इक्वेशन इफेक्ट नहीं होगी अगर h को मैं चेंज करूं दोनों साइड्स पे, या ये वाली फंक्शन चेंज नहीं होगी अगर h को मैं चेंज करूं ऑन अ सेट ऑफ मेजर 0, ऑन अ सेट ऑफ म्यू मेजर 0। क्योंकि अगर म्यू 0 है किसी सेट का, क्योंकि म्यू एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो न्यू मेजर भी उस सेट का 0 ही होगा जिस सेट का म्यू मेजर 0 है, बिकॉज न्यू इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। दैट्स व्हाट वी मीन बाय, मतलब अगर म्यू मेजर 0 है किसी सेट का, तो ई न्यू मेजर 0 भी है। यानी अगर मैं किसी जगह रीएडजस्ट करता हूँ ऑन सेट ऑफ म्यू मेजर 0, तो उसका न्यू मेजर भी 0 होगा। उसका मतलब यहाँ पर जो है इस इंटीग्रल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ आई मेक ए चेंज ऑफ, if I change this function h on a set of measure 0, I hope that, क्योंकि यहाँ पर भी वो set of measure 0 है तो वो इंटीग्रल में काउंट नहीं होगा, यहाँ पर भी इंटीग्रल में काउंट नहीं होगा। So no issues. So I can assume that h ऐसी function है which lies between 1 and 0, right? क्योंकि अगर कुछ वैल्यूज पे ये बाहर होगी भी तो उसका सेट मेजर 0 है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे जो रीप्रेजेंटेशन थ्योरम ने जो हमें दिया, that equation of integral f into 1 minus ht mu is equal to integral f ht mu, उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। Anyways, अब मैं वही लिखूंगा, since nu is absolutely continuous with respect to mu, it follows that star holds for h with h lying between, for h यहाँ पे with h lying between h positive and less than equal to 1 on the whole of x to measure space. So we're done. So now what we do, put g equal to 1 minus h by h. Now अगर मैं g को अब लूं एक function which is 1 minus h by h, where h is that function that belongs to L2 mu plus nu, which we know is contained in L1 mu. Actually, it's contained in L2 mu, which is contained in L1 mu. वो हम पहले ही बात कर चुके हैं. It's a subset, it's a subspace there. So अगर मैं लूंगा 1 minus h by h, so we claim that this belongs to L1 mu. It is actually mu measurable. अगर h वहां है तो 1 minus h भी है. पहले तो ये वेक्टर स्पेस है 1 minus h है ही, और दूसरा चूंकि ये बाउंडेड है तो है ना, because h is lies between 0 and 1 throughout the space, तो 1 minus h by h भी जो है बिलोंग करेंगे L1 में. ठीक है, yes, because this is actually 1 by h minus 1, so h is measurable, 1 by h is measurable, and both belong to L1 mu, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी measurable है. प्रोडक्ट नहीं, actually it's a difference with constant function. So
that is measurable, and of course it is integral. So once I wrote that, claim 2. Now we claim that claim second है मेरा कि nu of a जो हमारा definition था, that is exactly equal to, sorry, जो ना रेडॉन निकोडियम थ्योरम, nu of e is actually ये जो ये function है over the integral e gt for all e belonging to the measurable sets. See, now put u equal to fh, then star can be written, read it in star, so that अगर मैं u को substitute करूँ fh से, कुछ हमने किया नहीं, so you will get actually ug is equal to d mu is equal to u d nu, substitution है और कुछ नहीं, star. So once I do that, now let e belong to our sigma algebra of measurable sets, taking f equal to 1 by h on e and 0 on e complement. Suppose it is a measurable function, so characteristic function, characteristic nahi hai basically, it equates, it is equal to a measurable function on e, and outside it it's 0, e complement. So once I have done, तो इसमें simple substitution करना है. So अगर मैं ऐसा करता हूँ, I will get substitute करके I will get सीधा integral e g d mu is equal to integral e d mu, which is equal to nu of e, and the proof is done. And that's what we wanted, that is nu of e is equal to integral e g d mu. अब ये थोड़ा सा इसमें सब्स्टिट्यूशन है, वो चाहे तो हम यहाँ रफ पे कर सकते हैं, जो हमने किया था, कुछ खास नहीं है, थोड़ा मैनिपुलेशन ही है, ज्यादा ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है. तो अगर मैं f को यहाँ ये डालता हूँ तो u क्या बन जाएगा, u विल बी 1 on e, अगर मैं f को ये लेता हूँ 1 by h, तो e पे तो ये हो जाएगी 1, ठीक है ना, जो कि f0 है, it would be characteristic function on e. तो once u ये है तो इसमें डाल दो, तो you will get g d mu over e, जो ना मैंने लिखा है इक्वल टू ओवर e, या तो 1 बन जाएगा, है ना. अगर ऐसा हुआ, f को जब हम 1 by h डालेंगे, देन चलो मैं ये लिखता हूँ, तो so that u is equal to 1 on e is equal to 0 on e complement. So that finishes it. So let's stop here. वैसे 1-1.5 मिनट है. हाँ, तो मुझे लगता है हमारा शायद 3rd यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो गया. शायद एक आध रिजल्ट रह गया होगा, मैं चेक करूंगा. शायद एक रिजल्ट है मेरे दिमाग में, जो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज उनका एग्जाम है. आज सारे के सारे आए हैं. दैट्स गुड. एनी क्वेश्चंस? इसको फिर से देखना, और इसका जो मैंने दिया वो थोड़ा सा मैंने लिया है पीटर डी लैक्स की बुक से, फंक्शनल एनालिसिस बाय पीटर डी लैक्स. तुम उसको देखना, वो बहुत अच्छी किताब है. तो अगर तुम्हें उसकी सॉफ्ट